to a new video from the smallest state in India which still has so much to do, which happens to be the party capital of India, none other than Goa. तो मेरे चैनल पे साउथ गोवा पे ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने शेयर किया है हाउ यू कैन स्पेंड 3 days इन साउथ गोवा, लेकिन ये वीडियो प्राइमरीली होने वाला है नॉर्थ गोवा पे. तो अगर आप गोवा आ रहे हो एंड इफ यू लुकिंग फॉर हाउ टू बुक, वेयर टू बुक स्टे, वेयर टू स्टे एंड हाउ टू ट्रैवल अराउंड गोवा, व्हाट ऑल टू कवर, वो सब इस वीडियो में कवर होने वाला है. ये मेरा गोवा में 3rd टाइम है और पिछली 2 बार जो मैं थी गोवा में, इट हैज़ मेजरली बिन अबाउट साइट सीइंग, अबाउट विजिटिंग प्लेसेस, फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट यू डू फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोवा. बट इस बार मैं थोड़ा स्लो रखना चाहती थी. आई जस्ट वांटेड टू ट्रैवल स्लो and stay in one place. So I am basically in Anjuna, staying at this property called Woopers. But more on that later, क्योंकि अभी early morning है and it calls for a beach stroll. तो चलते हैं Vagator Beach, which is one of my favorite beaches in North Goa. Let's go there, and as I take you along the day, I'll keep sharing more about North Goa. Let's go. So before we make it to the beach, let me actually share how to get here and the best time to visit Goa as per me. So the only airport in Goa is called Dabolim Airport और वो साउथ की तरफ पड़ता है. तो अगर आप साउथ नॉर्थ दोनों विजिट करने का प्लान कर रहे हो, प्रॉब्ली यू कैन स्टार्ट विद साउथ गोवा एंड हेड टुवर्ड्स नॉर्थ. इनफैक्ट ट्रेन से भी बहुत वेल कनेक्टेड है. लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली से गोवा आई थी, आई टुक अ ट्रेन जर्नी ऑफ 28 hours एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल. विद इन गोवा इतने सारे रेलवे स्टेशन हैं, सो नो मैटर आपको नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, जिस भी लोकेशन में जाना है, देयर विल बी अ रेलवे स्टेशन क्लोज टू यू. और अगर आप कहीं आसपास से आ रहे हो तो एक ओवरनाइट बस, ओवरनाइट ट्रेन ले सकते हो. जैसे मैं भी मैंगलोर से आई थी करंटली, सो आई जस्ट टुक एन ओवरनाइट बस एंड इट वाज एन 8 hour लॉन्ग जर्नी. और अगर हम बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा, ऑफ कोर्स इट्स एन ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन, लेकिन अक्टूबर के बाद जनरली जो वेदर है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है. बट एट द सेम टाइम नवंबर दिसंबर इज पीक सीजन, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टूरिस्ट एंड ऑब्वियसली थिंग्स आर एक्सपेंसिव. एंड फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी आर ग्रेट फॉर विजिटिंग गोवा, बिकॉज टूरिस्ट थोड़े से कम हो जाते हैं रिलेटिवली एज कम्पेयर टू दिसंबर. द प्राइसेज आर गुड, एट द सेम टाइम द वेदर इज ऑल्सो प्लेजेंट. तो बस एक 10 मिनट की स्कूटी राइड के बाद हम पहुंच गए हैं वैगेटोर बीच. सो दिस वाज द फर्स्ट बीच दैट आई विजिटेड इन गोवा. जब मैं आई थी अराउंड 2.5-3 साल पहले विद माई बेस्ट फ्रेंड, एंड आई हैव सच फॉन्ड मेमोरीज विद दिस बीच, आई थिंक, विच इज़ वाई आई रियली लाइक इट. देयर आर 2 sides टू इट. एक साइड बेसिकली राइट एंड लेफ्ट साइड से है. जो राइट वाला साइड है वहाँ पे आपको एक क्लिफ व्यू भी मिलता है, एंड दिस इज़ वेयर यू हेड to the beach from. So चलते हैं beach, let's go. And now that I've seen both North and South Goa, now that मैं 3 बार आ चुकी हूँ, अब मैं ये बोलती हूँ कि मुझे पर्सनली साउथ गोवा में जाना इन जनरल ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम गोवा आ रहा है तो मुझे लगता है नॉर्थ गोवा ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज you get to see that party culture and that what Goa is basically famous for. That's what you get to see in North Goa. So North Goa I feel like is such a vibe. अगर आपको चूज़ करना है तो also depends on your purpose. जैसे अगर पार्टी करना, कैफेज जाना, सोशलाइज करना, ये सब आपके एजेंडा में है तो नॉर्थ गोवा इज वेयर यू शुड बी गोइंग. एंड साउथ गोवा हैज मोर ऑफ अ लेड बैक एंड पीसफुल वाइब. सो इफ दैट्स व्हाट यू आर सीकिंग, यू कैन हेड टुवर्ड्स साउथ गोवा. वैसे साउथ गोवा में भी पार्टीज होती हैं, कैफेज होते हैं, बट नॉट एज हैपनिंग एज नॉर्थ. एंड इवन अगर मैं बीचेस की बात करूँ तो द मोर ब्यूटिफुल बीचेस, द क्लीनर बीचेस, वो सब साउथ गोवा में है. और साउथ गोवा पे भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, सो आई एम गोना पुट इट समवेयर हियर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नाउ आई कांट वेट, सो लेट्स जस्ट हेड टू द बीच. और ये है मिलन, ये ऑफिशियल राइडर फॉर राइडर मेनिया एंड रॉयल एनफील्ड. ये नारियल है, ये प्यासी है और ये पी रही है. पी के दिखाओ. ट्रू स्टोरी, जब मैं बीच पे गई थी तो मैं इस माइंडसेट से थी दैट आई विल नॉट गेट इनटू द वाटर, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में इतना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है टू सन एंड सॉल्ट वाटर दैट आई डिड नॉट
want any more of it. But मैं बस एक rock पे बैठी थी for a picture and Abhigya was like, it's okay, go, I'll take a video. And this huge wave just hit my face. Legit felt like a slap from the ocean. And फिर से इतना ज़्यादा hair damage हो चुका है क्योंकि पहले मैं मुल्की में थी. I was learning surfing and रोज़ मैं जाती थी पानी में. I used to stay for like 4 or 5 hours every day. And अब गोवा में, so that called for some serious skin and hair care. So I recently got my hands on the BBlunt Intense shampoo and conditioner. BBlunt is a premier hair care brand and I can genuinely feel the difference. जितनी dryness और जितना frizz रहता था बालों में, it's definitely getting better. Primarily because it has jojoba oil and vitamin E, which kind of acts as a natural moisturizer. मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी अबाउट दिस ब्रांड कि जब भी आप एक परचेज करते हो, सो दे मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस अकेडमी कॉल्ड शाइन अकेडमी, वेर इन दे ट्रेन women in the field of hairstyling, so to, you know, in the vision to empower them, which is so amazing. So of course there's like a social cause added to it. And साथ साथ में I have felt the difference so my experience has been good. So if you are planning to experiment with a different hair care brand, I definitely recommend you try your hands on it. And if you do end up purchasing it, do not forget to use the code VISHA20 to get a flat 20% discount on your purchases that you can make on their own website. I will also leave a link for you in the description box below. And now let's get back to our day in Goa. Okay, so we are back from our early morning beach stroll and let me now tell you why I chose Anjuna as my base this time. So Anjuna की अगर आप location देखोगे, if you go further north, there are more beaches like Mandrim, Ashram, Morjim. Further north is Arambol and थोड़ी सी दूरी पे बागा, कलंगुट, कैंडोलिम भी है. So I feel like काफ़ी center में पड़ता है Anjuna, Vagator वाला region within North Goa. प्लस अंजुना में बहुत सारे अच्छे हॉस्टल ऑप्शंस है. इवन द पार्टी कल्चर हियर इज क्वाइट लेट. स्पीकिंग ऑफ विच, लेट मी शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन द हॉस्टल व्हेन आई एम करंटली लिविंग. इट्स कॉल्ड द वूपर्स हॉस्टल एंड काफ़ी नई है ये प्रॉपर्टी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब आप इस प्रॉपर्टी पे आते हो, द थिंग्स दैट यू सी, देयर इज अ पूल, देयर इज अ वेरी यू नो लाइवली वाइब टू इट. बट उसके साथ साथ आई थिंक द थिंग दैट आई अप्रिशिएटेड द मोस्ट वर हाउ फ्रेंडली द होस्ट्स वर एंड कैसे आपको एक टाइम के बाद होमली वाइब आने लगती है. इतनी ज़्यादा कि एक्चुअली हमें एक हफ्ता हो चुका है यहाँ आए हुए और बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक इट स्लो दिस टाइम इन गोवा, आई हैव जस्ट नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ हियर. हम लोग रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ करते हैं. कभी पूल पार्टी होती है, कभी बॉलीवुड नाइट होती है, कभी लाइक crazy things. So it's a lot of fun. It feels like we are part of Woopers now and we just keep organizing things and organizing parties. So if you're looking for a hostel in Anjuna, especially if you're a solo traveler, I highly recommend you this property. Also, whenever I look for hostels, मुझे बहुत hardcore party hostels नहीं पसंद, ना ही वो पसंद है जहाँ बहुत शांति हो and you don't get to meet people. So I feel like this is a good mix of both. इतनी parties नहीं होती है कि रात में आपको नींद ही ना आए and at the same time we have a lot of fun during the day. बाकी इन जनरल दो चीज़ें जो एटलीस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एवरी टाइम आई बुक इन अकोमोडेशन इज़ वन कि वो एटलीस्ट जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस या जिन भी जगहों पे मुझे जाना है वहाँ से पास हो, सो दैट आई कैन सेव ऑन दैट कम्यूट कॉस्ट या फिर आई कैन जस्ट वॉक अप टू प्लेसेस. एंड द सेकेंड थिंग इज़ द रिव्यूज़. मेक श्योर, जैसे मैं माई गो टू प्लेस टू बुक होटल्स एंड हॉस्टल्स इज़ booking.com एंड वहाँ पे आप सिंपली रिव्यूज़ पढ़ो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सॉर्ट इट न्यूएस्ट से, सो दैट यू कैन एक्चुअली सी आफ्टर कोविड या फिर एकदम रीसेंट रिव्यूज़ कैसे रहे हैं. रिव्यूज़ से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है प्रॉपर्टी के बारे में, थिंग्स दैट you need to be specific about. So that's something you can do in general भी. अगर if you're looking for Airbnb options, गोवा में बहुत सारे Airbnb options हैं. You can have like a long stay or something, and even if you're staying here you can have a workation. यहाँ पे मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, but I'm also getting a lot of work done thanks to this area that we have. और अब बहुत भूख लग रही है. I've ordered myself breakfast. Let's have that and as I take you along the day I'll share more and also hopefully make you meet people I've met here. ये जो मोहतरमा है ये बहुत अच्छे वीडियो बनाती है. वूपर्स के बारे में क्या कहना है यार, वूपर्स ही सब कुछ कह देता है. आई हैड कम टू वूपर्स फॉर 2 days and fortunately this is my 20th day today. Woopers is like a fancy home that you had dreamt about in the childhood. And if you're in Goa, you're in Anjuna, please
प्लीज़ कहीं और मत जाओ, ऊपर आओ। तो ऐसी ना बहुत कम जगहें होती है जहाँ आप आते हो और उसके बाद आपको वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, इवन तो आप गोवा जैसी जगह में हो। मैं गोवा आई थी एक लंबी लिस्ट लेके, यहाँ जाऊँगी, ये कैफ़ेज़ में जाऊँगी, जगह एक्सप्लोर करूँगी, लेकिन मैं कहाँ रही? इस प्रॉपर्टी पे, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग माई एक्सपीरियंस सो मच हियर। ओके, सो ऑल सेट टू हेड आउट फॉर द डे एंड दिन के टाइम क्योंकि काफ़ी सनी रहता है, सो द टाइम इज़ बेस्ट स्पेंट इंडोर्स से इन कैफ़ेज़ और म्यूजियम्स। एंड अंजुना की बेस्ट बात यही है, यहाँ पे इतने सारे कैफ़ेज़ हैं, इतने सारे आर्ट्सी एंड यू नो एस्थेटिक कैफ़ेज़ है, एंड आई फील लाइक देयर समथिंग अबाउट वर्किंग इन एन इंस्पायर्ड इन्वायरमेंट। तो क्योंकि मैं इस बार गोवा में थोड़े लंबे टाइम के लिए हूँ, आई थिंक टोटल ऑफ 10 days, तो आज मैं जा रही हूँ टू दिस कैफ़े कॉल्ड आर्टजुना कैफ़े, जो प्रॉपर्टी के बहुत पास है। ओके, सो द बेस्ट वे टू गेट अराउंड हियर इन गोवा इज़ टू एक्चुअली रेंट अ स्कूटी, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा कहीं अराउंड 400 पर डे टू 700 पर डे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सीजन इट इज़। जैसे दिसंबर में आओगे तो 600-700 पर डे पे पड़ सकता है। एंड अदर देन दैट, गोवा माइल्स जो गवर्नमेंट रन ऐप है, पहले वो काफ़ी रिलायबल हुआ करती थी, बट अभी मैंने उसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ नहीं सुने हैं। सो इफ़ नॉट स्कूटी, आई थिंक द अदर ऑप्शन दैट यू विल हैव इज़ टैक्सी। अदर देन दैट, यहाँ पे साइकिलिंग टूर्स के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत से कंपनीज है जो ऑर्गेनाइज कराती है, जैसे कि सोल ट्रैवलिंग, बी लाइव। आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो या फिर आप एक टूर ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई फील लाइक साइकिलिंग इज़ सच अ नाइस वे टू एक्सप्लोर एनी प्लेस। फूड की अगर मैं बात करूँ तो आसपास फूड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अंजुना इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टे। अगर मैं कैफ़ेज़ की बात करूँ तो मैं तो नहीं जा पाई, बट आई हैव दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ कैफ़ेज़। प्राना कैफ़े, ईवा कैफ़े, आर्टजुना, जहाँ पे वाईफाई अच्छा नहीं था जब मैं गई थी, बट इट्स अ गुड प्लेस, द वाइब इज़ गुड। देर इज़ जामुन, देर इज़ पर्पल मार्टिनी। वैगेटोर में एक है ऑलिव बार एंड किचन, जो बहुत एक फैंसी सा रेस्टोरेंट है, बट मुझे वहाँ का व्यू और खाना सब कुछ बहुत पसंद है, एंड आई वुड लव टू जस्ट स्पेंड एन आफ्टरनून sitting there and eating. So I'm going to leave the list of all the cafes that I recommend in near Anjuna, Vagator, basically in North Goa, right about now. Along with the cafes, please do not miss out the small and often hidden bakeries and ice cream shops in Goa. Some of my personal favorites were Jaws Bakery in Vagator, which has a wide variety of puffs. Their chocolate croissant is to die for, and you'll find the place always full of locals, which just goes on to show how good that place must be. And Cream Chalk for the absolute best gelatos and sorbets. They have multiple outlets in Goa, and my personal favorite flavor here was roasted hazelnut, which I used to have almost every other day in Goa. और मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ नॉन वेजिटेरियन रिकमेंडेशन शेयर करना चाहूँ जो मुझे मिले हैं और लोगों से यहाँ पे जो हॉस्टल में रुके हैं। सो एक जगह है कॉल्ड रामेश, जो बहुत पास है यहाँ से, अंजुना में ही है, जहाँ की फ़िश थाली बहुत फेमस है। सो मे बी दैट्स अ प्लेस यू कैन चेक आउट। एक और है महुआ द रूरल किचन, एंड तीसरी जगह है विनायक रेस्टोरेंट इन वैगेटोर। मैंने पर्सनली विनायक रेस्टोरेंट के बारे में भी बहुत सुना है, बट आई एम श्योर यू विल फाइंड वेयर टू ईट नॉन वेजिटेरियन. And how can we miss talking about the nightlife in Goa, which is something that attracts people from all over the world. Now, I'm not much of a party person, but there are still two places that I explored and really liked. One is the very famous restaurant called Thalassa, and second is Darling's Lane, which is a very narrow lane. It goes live at 12 during midnight, has a very nice local Goan vibe to it. You will find live music playing there, and also there's this bar called Aram Bar, which serves a very unique drink made of orak, which is a local alcohol, kokum, and a lot of other things, and also served with green chili on top. You should definitely give it a try because it makes for a perfect drink to enjoy with your friends while exploring the nightlife. So evenings में या तो हम रहते हैं हॉस्टल में, वूपर्स में, एंड वी हैव अ नाइस पूल पार्टी, या फिर कुछ ना कुछ करते हैं, कोई गेम्स खेल लेते हैं, या फिर इवनिंग्स इन गोवा आर फॉर वॉचिंग सनसेट्स एट द बीच. स्पीकिंग ऑफ विच, वी आर एट Vagator Beach.
And finally, if you're looking for the top tourist attractions and a rough itinerary for North Goa, I already have a video on that, the link to which I'll leave in the description box below. Hope this video helps you plan out your Goa trip, and if it does, do not forget to hit the like button, subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Bye. Welcome to Woopers! My धर्म This drink has been made by me. Try करो और बताओ कैसा है. सच में बोल रहा हूँ, ये ड्रिंक गीला है. रंजिश अब कबूल, जी लो भर, क्योंकि बाकी सारी बातें फिजूल.